procedure to isolate the protein from animal tissue seems relatively easier. जो चीज़ जितनी आसान होती है उसमें उतनी ही आसानी से प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं. सो अगर स्टेप्स के हवाले से देखा जाए, वेरी फ्यू स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड, लेकिन इसमें एट द सेम टाइम हमें कॉशंस को भी सामने रखना है. The first step, which is the most important, is to maintain the temperature. Protein isolation is done from 0 to 4 degrees centigrade. So whatever you are going to use, whether this is glassware, this is any buffer or anything used for isolation of protein, it should be pre-cooled from 0 to 4 degrees centigrade. जब बात आएगी centrifuge की, then centrifuge should also be cooled and chilled at 4 degree centigrade. So prior to start of proceeding further, जो extraction है उसको start करने से पहले आपको centrifuge switch on करना है, क्योंकि room temperature normally 20 to 25 होता है lab में. इसको reduce होते होते up to 4 degree centigrade तक आते आते time चाहिए. So we need to switch it on beforehand, and all the other required reagents, tubes should be refrigerated or should be chilled at 4 degree centigrade. Tissue preparation then comes under observation. हमारे पास जब टिश्यू की बात करते हैं, एनिमल टिश्यू की बात करते हैं, then there comes the fat as well. Tissues comes with fat. Fat is not required for protein isolation. So very carefully we should remove the fat. We should trim the boundaries of the organ or the tissue and try to get rid of fat as maximum as possible. There should be no blood vessel and it should be chilled tissue. Means you should work on ice, not on the working bench at room temperature. Once the fat is removed, then the big tissue is diced into smaller pieces. The ideal weight of the piece is around 100 milligram. उसकी रीज़न क्या होती है कि जब आप 100 मिलीग्राम के पीस को फर्दर होमोजेनाइजेशन की तरफ लेके चलते हैं तो इट इज़ ईजियर टू होमोजेनाइज इट एंड टू रिकवर मैक्सिमम प्रोटीन एंड एज कम्पेयर टू द बिगर पीस. और अगर आपने इस तरफ अटेंशन पे ना की और फैट को भी साथ लेके चले तो फैट जो है नेक्स्ट स्टेप्स में प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के साथ इंटरफेयर करेगी और आपके पास जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन आनी चाहिए वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकती है या डिक्रीज कर जाएगी. डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द टिश्यू वी चूज वेदर वी आर गोइंग टू यूज होमोजेनाइजर और वी आर गोइंग टू यूज द ब्लेंडर. यहाँ पे हम बात करेंगे 100 मिलीग्राम टिश्यू सैंपल की. फॉर दैट पर्पज वी आर गोइंग टू यूज अल्ट्रा ट्यूरेक्स homogenizer and the tissue is going to be placed in the homogenization buffer, 10 volumes of homogenization buffer, and the homogenization is done for 10 seconds 3 times. Prolonged use of this machine will cause heating. जब आप देखते हैं हमारे पास जो ब्लेड है होमोजेनाइजर का, जब वो हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करता है डेफिनेटली हीट प्रोड्यूस होती है एंड वी शुड प्रोटेक्ट आवर प्रोटीन फ्रॉम द हीट. हमने अभी स्टार्ट में बात की वी हैव टू वर्क ऑन दी लो टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक. दैट इज द रीजन वी होमोजेनाइज द टिश्यू फॉर शॉर्टर इंटरवल सो दैट द टेम्परेचर शुड नॉट गो very high. Once the homogenization is done, this homogenate is taken up in a syringe and using a 22G injection or needle, we pass this homogenate from the needle 5 times. We can pull it up, we can push it out in the tube so that any lumps, any aggregates should be broken down. Then centrifugation is done at 4 degrees centigrade for 5 minutes. The speed should be 10,000 G. After this centrifugation, we are going to separate the supernatant. This supernatant is important. This contains our proteins, whereas the pellet contains the cellular debris or any material which is unwanted. Once we separate these proteins, this supernatant, we can determine the concentration
of the protein by any method earlier discussed, and until further use, the supernatant containing all the proteins is stored at minus 20 degrees centigrade. This protein can be used for Western blot or for any other kind of methods or studies.